Today we will discuss on a very important theory of learning. Previously, you have already learnt about two different theories. One is trial and error learning theory by E. L. Thorndike, and another one is conditioned response theory, and from that is classical conditioning was developed by Pavlov, Ivan P. Pavlov, and those two theories were from behaviorist group of psychology. And today we will discuss the insight learning or insightful learning theory, which is a theory from the school of psychology known as Gestalt psychology. And this psychology is based on the learning through cognition and learning through insight. Therefore, the name is like that, insight learning. And you see the three profounders of these Gestalt schools or psychologists of Gestalt school: Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka. And these Gestalt psychologists, they are from Germany and they settled in America. They developed this school of psychology is known as Gestalt school of psychology, and the theory of learning is known as learning by insight. In Gestalt, Wertheimer is known as the father of Gestalt school of psychology, and according to this theory, perception is the basis of learning, or nature of learning is perception. And this insightful learning theory was developed by Kohler, by Wolfgang Kohler, and he has done his experiment on chimpanzees. This meaning of Gestalt, what do you mean by Gestalt? This word is not familiar to you. This Gestalt word comes from a German word that is known as configuration or whole or organized whole or pattern, that any stimulus situation is a organized situation, and this learning is the perception of whole situations rather than part, which we have already we had already discussed on the behaviorism or behaviorist school of psychology, that is trial and error learning theory and conditioned response theory. A behaviorist group of psychology, they develop theory that is learning is based on the connection between stimulus and response. ତେଣୁ ସେଠି behaviorist group ରେ ଯେଉଁମାନେ E. L. Thorndike, we have already discussed previously that trial and error learning theory, where the learning takes place by means of the connection between stimulus and response. The bond formed, that is known as stimulus response bond or SR bond. When bond formed, then learning takes place. But in this case, there is no stimulus response bond, but learning is a intelligent act. When the individual or learner that acts intelligently and understanding involved in this case, guessing is not found in this case. Therefore, in Gestalt word, that is means that means whole or configuration, and here the learner perceives the stimulus situation as a whole, then he moves towards the part or found the solution. A Gestalt psychology tried learning as a purposive, exploratory and creative enterprises instead of only formation of bond between stimulus and response. एठारे कौन हम ना ये लर्निंग थ्योरी जोटा गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी रे एठी अंडरस्टैंडिंगटा ऊपर गुरुत्व दिया होची, जहाँ द्वारा कि पिला माने जे पढ़िबे से गोटे होल सिचुएशन को देखिबे. जेमती तुम मन पकेब ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जो कैट एक्सपेरिमेंटा होता सेठी कैट शिखला कौन ना हाउ टू ओपन द डोर टू गेट द फिश. फिश इज स्टिमुलस एंड activities to open the door is response. Here stimulus response bond formation hela kemiti na when the cat got the food, that is reinforcement or reward.
किंतु रिवार्ड पाइबारु से लर्निंग टा शिखिला किंतु दैट लर्निंग इज बाय चांस एंड मेकानिकल व्हेयर एज इन दिस केस इनसाइटफुल लर्निंग here mechanical learning is not there, but the intelligence way of solving the problem and learning takes place as the perception of whole field. Then what is insight? Power of perceiving the whole situation, that name is in the German word Gestalt, means perception of whole situation, that is also known as insight. Insight means perceiving the whole situation. गोटे पूरा situation को गोटे intelligent way रे जने observe करिवा, that is insight. This act of or result of apprehending the inner nature of things or seeing intuitively. जे कौन सी जिनस जने देखिबो खाली मेकानिकली देखिबो नहीं, गोटे होल सिचुएशन को देखिकी तार गोटे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करिवो, सी तार गोटे किछि इंटेलिजेंटली से तार भाविबो बा चिंता करिवो. This theory was developed by the German psychologist named Wolfgang Kohler. This name of this theory is insight learning or insightful learning theory. He conducted experiments on chimpanzees. There are so many experiments were conducted by him in the west coast of Africa. He was there and he conducted experiments on one chimpanzee known as Sultan. The results of the experiments were published there and it is translated into English in the year 1925. And the results were published during 1933 to 1917. During the World War I, he was there and he had conducted so many experiments and the results were published. And the first experiment he had done so many experiments that is known as Kohler's box experiment and stick experiments. First experiment, that is Kohler's box experiment. In this experiment he had provided the situation where a problematic situation where a hungry chimpanzee Sultan was put in a cage. The cage, inside the cage, this Sultan, that is hungry chimpanzee, was placed, and bananas hung from the top or roof of the cage. That banana was placed inside the cage from the top roof of the cage. Chimpanzee tried to get the banana from the roof, but the task is how to get banana, but it was away from the chimpanzee Sultan. But how to reach that place, that is the task. Chimpanzee was hungry, therefore he wanted to reach the banana. He tried to different activities, he jumped but could not get it. Then he found that one box was there. The box, he tried to get the banana jumping over the box, but could not found it or could not get it. Then after some times he sat on a sat inside the cage in a corner, and after some time suddenly a flash of mind, flash of thought came into his mind or idea. That sudden idea is known as insight. That insight, that is mentally he was able to solve the problem, how to get that banana. That is known as sudden solution is known as the insight. That is the idea, wow, I can get it, I can do it, that idea is known as insight. When chimpanzee mentally solved the problem, then he tried to get it. He went up to the box and then jumped high and can catch the banana and get the banana. This was one of the experiments of box experiment. Then second box experiment, that was quite complex. A hungry chimpanzee Sultan was placed in the box,
banana was hung from the roof, but rather than one box, 2 to 3 boxes were provided inside the cage. After so many unsuccessful trials, he tried to get the banana, one box, then he tried with 2 boxes, then he could not get it. And after sometimes, after some trials, unsuccessful trials, after some 1 hour, he also thought how to solve the problem mentally. Then after some times, after a pause, after some time, sudden flash of mind or sudden idea came into his mind. That idea is known as insight. He mentally prepared to solve the problem. How? How he can solve the problem. Then he put one box over the other, stack the box one by one, and then he could get the banana. He could reach the banana and satisfied with banana. Here the goal is banana, and these activities are random activities, these are unsuccessful trials, but sudden flash of mind or sudden solution inside the mind or idea is known as insight. Therefore, here chimpanzee learned how to solve the problem mentally, that is intelligently he solved the problem. How? Now observing the total situation. The total situation, what was the situation there? That is a complex situation where the chimpanzee, hungry chimpanzee was placed. The name was Sultan. He was placed inside the box. There was a banana that was hung from the roof of the cage or ceiling of the cage was his goal. How to reach that goal? That is his attempt to reach the banana and get it. Therefore, the activities are the known as the trials, and successfully he thought the idea, that is sudden flash, that is known as insight, and how to solve the problem he learned from this, and this is known as insightful learning, and this learning was permanent and he can apply it in other situations also. Then another experiment developed by that conducted by the Kohler, the one hungry chimpanzee was put inside the cage. This is known as stick experiment. He used stick instead of boxes. Kohler put hungry Sultan, that chimpanzee, inside the box, and there were 2 sticks, one is small, one is large, but banana was placed outside the cage, that is away from the Sultan. He cannot get either of these sticks, that is away from the easy reach of 2 sticks. Then banana, neither of these sticks could reach the banana individually. जदि गोटे स्टिक को भी से बढ़ेब बानाना को जानीपारे, दुईटा एक स्टिक व्यवहार कले भी गोटा को आउ गोटे को गोटे लॉन्ग गोटे शॉर्ट, एंड दिस देयर इज वन ऑफ द स्टिक्स हैज अ hollow end. Then the after Sultan doing a lot of activities, that is playing with that stick, one stick, then 2 sticks, then playing with 2 sticks, again suddenly the 2 sticks fit into each other. This after the sticks were joined, the Sultan sit and thought about that, and suddenly that flash of mind or sudden insight came into his mind, and he applied that mental solution was applied, and the joint stick, he used this joint stick to get the banana from outside the cage. Then accidentally the sticks are joined, therefore, he can get the idea. With sudden insight, Sultan mentally solved the problem and reached the banana. Acha, this is you can see this how this chimpanzee was doing this activity. These are the different box and stick experiments, and এই सिचुएसन रे कौन होची ना इनसाइटफुल लर्निंग रे गोटे बॉक्स एक्सपेरिमेंट हैला आ गोटे स्टिक एक्सपेरिमेंट हैला. कोलर बॉक्स एक्सपेरिमेंट रे
भितर बॉक्स गोटे बॉक्स रखिले ऊपर गोटे बानाना टंगा है कदली टंगा है से कदलीटा हूँ तार गोल बा लक्ष्य से लक्ष्य पहुँचापी सी विभिन्न एक्टिविटीज करुच्ची से एक्टिविटीज भितर सी बॉक्स रे ठिया होइछि हाथ बढ़ाऊँगी किंतु पाउनी एमती केते गुडा एक्टिविटीज पर ट्रायल्स पर सी तापर किछ समय बसी जाउछि एठी लर्निंग केमिति होउछि ना गोटे होल पूरा सिचुएशन को देखुछि पूरा सिचुएशन रे कौन जिनस अच्छी एटी स्टिमुलस होउछि बॉक्स आउ तार गोल होउछि बानाना बा कदली तेणु एठी होल सिचुएशन को देखी से केमती से कदली की आनिबो बा खाइबो सेथिपई चेष्टा करछि चेष्टा कला परे तो चुप हे बसी जाइछि तार गोटे हठात गोटे माइंड रे तार इनसाइट बा अंतर्दृष्टि आसुछि इनसाइटफुल लर्निंग माने अंतर्दृष्टि तार अंतर्दृष्टि गोटे आसुछि जोटा कि मेंटल से मने मने गोटे सॉल्यूशन ता चली आछि तेणु इंपोर्टेंट होछि आइडिया आइडिया आग आसला परे ट्राइड दैट आइडिया ताको चेष्टा कला केमती आनिबो बॉक्स ऊपर ठिया है कि डेई पड़ला डेई पड़ी से कदलटा खाई पाला सेकंड एक्सपेरिमेंट रे सेमती बॉक्स एक्सपेरिमेंट रे केते गुडे बॉक्स अच्छी दी तीनटा बॉक्स व्यवहार करचंती विभिन्न जगह थुआ होइछि तेणु होल सिचुएशन को से देखला जो थे कि से बॉक्स गुड़ा को से देखी आउ तार गोल सहित सेटा कोरिलेट करुच्ची केमिति से आनिबो बॉक्स संगे से लक्ष्यर कौन रिलेशन रोची तेणु ही एस्टाब्लिश पार्ट रिलेशनशिप बाय कनेक्टिंग द स्टिमुलस से स्टिमुलस माने एठी बॉक्स बॉक्स भितर से गुड़ा को ताको एकाठी आइडियाटा को केमिति करुच्ची ना सेही तार सडन गोटे माइंड भितर आसुची सॉल्यूशन जे बॉक्सटा को ता ऊपर ऊपर थोइले ता ऊपर चढ़ी की तार पाइबो एई आइडियासटा हला इनसाइट बा अंतर्दृष्टि जहा द्वारा कि तार ई समस्यार समाधान करि पारुची थर्ड एक्सपेरिमेंट रे दुईटा स्टिक बा काठी व्यवहार करा हैची जोटा कि एठी केज भितर पंजरी भितर अच्छी सुल्तान बा सिंपाजी ता ना सुल्तान बाहर अच्छी कदली से जोटा कि गोटे स्टिक बढ़ेले छोट गोटे बड़ स्टिक गोटे छोट स्टिक बढ़ेले कदली आनी पाउनी बड़ स्टिकटा को बढ़ेले भी कदली को पाउनी सी जो ये दुईटी बाड़ी को धरी बा स्टिक्स को धरी खेलुची लट ऑफ ट्रायल्स करछि केते गुडे ट्रायल्स रे फेल्युअर होउची खेलु खेलु हठात करी गोटे बाड़ी रो बा स्टिक रो एंड रे गोटे खोला जगह अच्छी आ गोटे स्टिक फिट हो जाउची हे जिबा फल रे सी तापर देखि कि सेही बाड़ीटा को धरि कि सी चिंता करूची हियर थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग इंटेलिजेंट थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट ये भावुची केमिति मु ताको आनिबी तेणु सी इंटेलिजेंटली ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम तेणु से दीटा को जॉइंट करी तापर बढ़ेची जो बानानाटा ये मिली कदली मिली तार सैटिस्फैक्शन आसूची तेणु आमर गोटे फास्ट है अर्ज इनसाइड हिम नीड टू गेट द banana or food, then he did lot of activities. After that he got the desired goal, that is banana. Therefore insightful learning is known as the learning of insight or intelligence way of solving the problem. Acha, here there is insight, how insight developed. Therefore there are stages of insight, development of insight, how insight is developed. The stages of development, first है need to reach the goal. Here goal is banana. How to reach the goal? There is the need. First is need. Therefore the sultan is hungry. तार यदि hungry न था ताले आवश्यकता नथिले से गोल रे पहुँची पारंता नाही. तेणु here need or drive is important to reach the goal. First stage is therefore preparation. Here he prepared the thing. The physically and mentally the sultan prepared himself. तेणु preparation is the first step of stage of insight. तेणु need आग दरकार आवश्यकता टू माने लक्ष्य रे पहुँचा आवश्यकता दरकार से प्रिपेरेसन दरकार. फर्स्ट स्टेज इज प्रिपेरेसन. सेकेंड स्टेज इज नोन एज सर्वेज, इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड स्टिमुलस फील्ड. देन ही सर्वेड. ये एक्सपेरिमेंट रे देखो जोटी कि से सर्वे कला कौन कौन अच्छी इस केमिति मु पाहिबी से गोल रे बा लक्ष्य रे मु केमिति पहुँचबी ताहले केमिति पहुँचबो से ना सेठी देखिला कौन कौन अच्छी ताकू केमिति मु यूज करिबी तेणु मो सेठी पहुँचबी ताधरे सेटा कौन है ना दिस इज द सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज इज नोन एज इनक्यूबेशन. इनक्यूबेशन पीरियड मीन्स आफ्टर लॉट ऑफ एक्टिविटीज ही सैट इन द कॉर्नर जो बसीगला चुपकि दैट पॉज पीरियड इज नोन एज इनक्यूबेशन पीरियड.
जो थे कि जो मान सब डिफरेंट प्रोब्लेम सॉल्यूशन पाई कि कौन कौन अच्छी कौन कौन स्टिमुलस अच्छी बा कौन कौन सब उपादान अच्छी जोटा को भाविकी चिंता करी जो बसी जा कि समय चिंता करवा दैट इज पॉज बा incubation period. After that, sudden flash of mind, sudden ideas that wow, I can do this, I can do this, this is the idea, I can apply it. That mental solution is known as insight. That is fourth stage known as development of insight. Then insight जो तार डेभलप हो गला केमी सॉल्यूशन करिवो ताहले मेंटली से सॉल्यूशन कला एथरो प्रैक्टिकली ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एठी प्रैक्टिकली केमिति कला ना स्टिक दुईटा को जॉइन कर देइथला ताकू बढ़ेई कि आनिला बा बॉक्स रे चढ़ी कि से कदली केमिति खाइबो चेष्टा कला. दैट इज प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन. दैट इज द फिफ्थ स्टेज. देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम हाउ से सॉल्व एक्चुअल सॉल्यूशन से आनिला प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कला माने होउछि ना नाही देखिला चेष्टा कला तापर हेई पारुछि तेणु प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बा समस्यार समाधान से करि पारला. दैट इज द सिक्स्थ स्टेज. देन लास्ट रे इनसाइट व्हाट एवर इनसाइट ही गेन्ड दैट अप्लाई इनटू डिफरेंट सिचुएशन. one situation one box then two box experiment he applied that. The solution procedure he applied in second experiment. Then in third experiment subsequent experiments he applied his mind, or any subsequent problem same problem situation the individual can apply the first idea, that insight into different fields. It is the last stage of development of insight. Here this insightful learning, what are the common features of the this experiment. जो experiment कराला तर कौन कौन common features रहुची. Here perception is the main center of the learning. जो लर्निंग रे परसीव करुची होल सिचुएशन को ऑब्जर्व करुची दैट इज द मेन नेचर ऑफ लर्निंग इज परसेप्शन. आग जदि से सिचुएशन टाको भल भाव में ऑब्जर्व न करिवो इन्स्पेक्ट न करिवो सर्वे न करिवो ताहले सॉल्यूशन आसीबनी. तेणु परसेप्शन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग और नेचर ऑफ लर्निंग इज परसेप्शन. देन सेकेंड फीचर हैला reaction to the whole situation. Here he reacted to whole situation not part situation. तो मन पकई पारिबो पूर्वरु ट्रायल एंड एरर लर्निंग रे जते बेले जो बिराडी ऊपर एक्सपेरिमेंट हेइथिला कैट ऊपर सी कोन करथिला ना बाय चांस से जो करूथिला गोटे माछ खाइबो बोली बाहरु बॉक्स भीतर से विभिन्न एक्टिविटीज करू करू बाय चांस तार सॉल्यूशन आसला. सी गोटे होची तादरे हठात करी आसला विदाउट एनी इंटेलिजेंस. तेणु एटा को कहला ना रिएक्शन टू द होल सिचुएशन. हियर सेकेंड स्टेज ऑफ मान सेकेंड फीचर हैला तो रिएक्शन टू द होल सिचुएशन इज इम्पोर्टेंट देन पार्ट. थर्ड रे परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड द गोल. हियर मीन्स इज द डिफरेंट एक्टिविटीज सॉरी डिफरेंट स्टिमुलस. दैट इज कौन अच्छी ना एठारे स्टिक दुईटा मीन्स बा बॉक्स जो थुआ हैला दिज आर द मीन्स को माध्यम से गोल रे पहुँचब. टी बॉक्स एठी मीन्स स्टिक गुड़ाक मीन्स आउ एंड द गोल इज द बानाना. तेणु लक्ष्य है बानाना पाइब बानाना इज गोल एंड दिस स्टिक्स आउ हियर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रे बॉक्स दिज आर द मीन्स. तेणु हाउ टू गेट द बानाना दैट इज गोल हाउ टू रीच द गोल यूजिंग दिस मीन्स that is one of the characteristics of this theory. And then restructuring of perceptual field. Here the perceptual field है कौन ना केज भितर जो सब रहा दैट फील्ड इज परसेप्चुअल फील्ड होल फील्ड ता भितर बॉक्स सब अलग जगार अच्छी ताकू सी रिस्ट्रक्चर कला गोटे बॉक्स उपर आउटे बॉक्स थोइला ताहले कौन है ना रिस्ट्रक्चरिंग कला जेमती थिला सेमती न तेणु स्टिमुलस फील्ड टाकू से आउ थरे ताकू तैयारी कला ऑर्गेनाइज्ड कला से ये थ्योरी कहउछि ऑर्गेनाइज्ड होल तेणु ये होल सिचुएशन टाकू ऑर्गेनाइज कला तापर से पाई पारला एठी स्टिक दुईटा को जॉइन कला तेणु रिस्ट्रक्चर कला जेमती थिला सेमती न रखी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ परसेप्चुअल फील्ड एंड गेट द गोल. देन the behavior that was made by the individual or the sultan chimpanzee, that is trial and error. He did different method, applied different method to solve the problem. These methods are known as trial and error. This trial and error or guess
is intelligent guess. Here not on just blind or wild guess. It is intelligently he guess to solve the problem. एटी इंटेलिजेंस यूज होची, थिंकिंग यूज करुच्ची। एटी खाली हठात करी बाई चांस जमी ता गोड़ बाजीगला बिराड़ीर ट्रायल एंड एरर रे गेट खोलीगला से पाईगला माछ नुहे। एटी से इंटेलिजेंट वे रे तार केमिति भाबुची चिंता करुच्ची, तार सॉल्यूशन निजे मन भितर से तार समाधान खोजुची एवं पाउची। तेणु तापर सेकेंड तापर हैला सडन अरूजल ऑफ इनसाइट। एटा कला परे तापर जतबे देखिला सब रिलेशनशिप आ भितर एस्टाब्लिश हे गला, तापर रिस्ट्रक्चर कर देला डिफरेंट फील्ड को, फील्ड भितर जहाँ जहाँ अच्छी साधन ताको सब यूज कला व्यवहार कला। तापर सडन अरूजल ऑफ इनसाइट, इनसाइट अराउज सडनली, सडन फ्लैश ऑफ माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देन आफ्टर insightful solution, the idea or the insight retained inside the mind of the learner, or here the mind of the chimpanzee, that was applied in other fields also, extended to similar problem, other similar problem रे सेटा extend करा जाई पारला। तापरे this insightful learning that depends on the capacity of the learner, capacity of the learner केते capacity कहार अछि केते बुझी पारिबो। तेणु एटी इंटेलिजेंस टा depend on the capacity of the individual, capacity of the learner, learner केते capacity अछि, the capacity depends on age, experience, intelligence level या ऊपर निर्भर करे। तेणु ए इनसाइट बूस्टेड कैपेसिटी टू लर्न, तेणु इनसाइट टा तुमर कैपेसिटी केते करछि ताको डेवलप करि भी पारिबो। तेणु आमे ए जो आमे कहले डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इनसाइट we can apply to in the classroom situation when the child learns how to develop this insight. These stages of insight can be applied to classroom situation. The stages of insight hela first re the preparation stage, the child must be prepared to learn. केमिति prepare करिवो? First mental preparation, he must have thirst for knowledge, ता भितर ज्ञान आहरण पई ता भितर गोटे आग्रह सृष्टि होबो, तार नीड रहिबो, आवश्यकता रहिबो शिखिबा पई। से आवश्यकता नेचुरल नीड रहिछि, तापरे हमरो साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशियोलॉजिकल नीड्स, तेणु तार आवश्यकता रहिले से शिखिबा को इच्छा करिवो। तेणु ही द लर्नर मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू लर्न। प्रिपेरेसन केमिति करिवो ना मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली भी प्रिपेयर होबो। तेणु एटा फर्स्ट स्टेज ऑफ इनसाइट। देन सेकंड स्टेज रे से प्रिपेरेसन परे तार सब रिलेशन देखिबो डिफरेंट फील्ड रे व्हाट आर डिफरेंट स्टिमुलस, स्टिमुलस माने एनवायरमेंटल सिचुएशन, ता पई डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस कोन अछि, ताको जो प्रॉब्लम सिचुएशन रे ताको रहिछि बा लर्निंग पाई कि जहाँ सिचुएशन अछि ता भितर से ता भितर संपर्क स्थापन करिवो। He can establish a relationship among these stimulus. Then he develop a incubation period is there. Incubation period means जो समय से स्थिर होइके रहिबो, सब प्रकार साधन देखी टोटल सिचुएशन को देखी स्थिर भावे भाबिबो, चिंता करिवो, ताको तो प्रॉब्लम दिया जिवो बा समस्या दिया जिवो, से बसिकी चिंता करिवो, विभिन्न प्रकार उपाय रे केमिति ताको समाधान करिवो, आउ एई प्रकार साधन सब व्यवहार करी केमिति समाधान करिवो। तेणु एटा हला इनक्यूबेशन पीरियड, दैट इज ए पीरियड ऑफ पॉज, स्थिर होइके बसिबो, स्थिर होई चिंता करिवो कोन करिवो। तापरे एई समय रे निस्तार गोटे आइडिया बा ता गोटे आइडिया आसीबो जोटा कि सडनली ता मुंड को आसीबो, दैट सडन आइडिया इज नोन एज इनसाइट बा दैट इज इंट्यूटिव आइडिया बा दैट इज इंटेलिजेंट गेस। तेणु पिलाटा गेस करिवा दरकार, ताकू जेतेबेले सॉल्यूशन प्रॉब्लम दिया जिवो तार समाधान पई सेतेबेले ताकू पिला मानकू एनकरेज करिवा दरकार टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्यूशन, गेस करिवा पई, गेस कर केमिति हबो सॉल्यूशन, ता गोटे गेस करिकरी ता केमिति समाधान हबो। तेणु एठी कोन हैला ना से गेस करिकरी तार सडन फ्लैश ऑफ माइंड आसीबो, दैट आइडिया कैन बी वेरीफाइड, केमिति वेरीफाई करिवो देखिबो हेई परछि ना नाही, तापरे प्रैक्टिकली ही विल वेरीफाई दैट आइडिया। जो प्रैक्टिकली वेरीफाई कला परे ताको जदी मिली गला तार गोल बा लक्ष्य से हासिल करी गला, ही विल बी मोटिवेटेड टू लर्न।
सी जो मोटिवेशन तार आसीबो से जो गोल पहुँची गला दैट लर्निंग इज परमानेंट एंड दिस लर्निंग कैन बी अप्लाइड टू सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन बा सिमिलर प्रोब्लेम्स पिला यदि सही प्रकार आउ अन्य प्रकार समस्या ताकू दबा सिमिलर प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करि परिबो आमे जदि एग्जांपल दबा फ्रॉम स्कूल लर्निंग मैथमेटिक्स पिला जो पढ़ुची मैथमेटिक्स पिला आग्रह करूनी कहीं करूनी ना ताकू आमे मेंटली प्रिपेयर करूने ताकू आगो प्रिपेयर करवा इजी इजी मैथमेटिक्स जोटा कि तार गोल से पहुँची पारुची तेणु ता गोल मस्ट बी अट्रैक्टिव पिला को प्रिपेयर करवा दरकार केमिति करिवु तापरे ताकू डिफरेंट एग्जांपल्स दवा दरकार एग्जांपल्स देकी ताकू को वेज सब दवा दरकार को वेज बा को माध्यम रे से सॉल्यूशन करिवो से निजे खोजिबो निजे खोजी खोजी तापर एतबे से समस्यार समाधानटा करि परिवो तापर से जो समस्या समाधान कला ताकू बारंबार घोषिबा दरकार नहीं जदि आमे पिलाटा गोटे टेबुल बा पणिकिया शिखौचे ताकू आमे कहिबा पणिकियाटा घोषेई दबा आउ गोटे प्रोसेस रे ताकू आमे ता प्रोसेसटा अंडरस्टैंडिंग रे बुझेइबा 2 दुणे 4 2 2 मिसले 4 होची 2 3 6 2 + 2 6 होची एटा होची ताको अंडरस्टैंडिंग हैला आउ जदि आमे खाली घोषेई दबा ताले ड्रिल प्रैक्टिस दैट इज मेकानिकल ड्रिल एंड प्रैक्टिस दैट थ्योरी इज थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दैट इज ड्रिल प्रैक्टिस लोअर क्लास प्राइमरी क्लासेस रे हबो हायर क्लासेस रे पिला अंडरस्टैंडिंग दरकार तेणु थरे जदि अंडरस्टैंडिंग तार डेभलप हैला ही कैन अप्लाई अदर हायर मैथमेटिक्स को ताकू आउ घोषिबा को पड़िबनी गोटे a + b रो होल स्क्वायर ताकू घोषि दउची a² + b² + 2ab किंतु ताकू यदि आमे अंडरस्टैंडिंग देखैबा हाउ a + b² द सूत्र केमिति हैला a² + b² + 2ab सेते बेले से जानिबो a + b को केमिति आमे गुणिला पुनी a + b रे हेई परला तेणु ए अंडरस्टैंडिंग टा डेभलप हबो हायर क्लास रे सीटा हबो तेणु सेमती एई प्रकार मैथमेटिक्स टा ताकू दबा ता सहित आउ केते गुडे मेंटल मैथमेटिक्स जेतेबेले दिया जिवो सी तार निजे सॉल्व करिवो निजे ताकू सॉल्यूशन बाहर करिवो सी जेतेबेले निजे सॉल्यूशन बाहर करिवो से सेतेबेले सैटिस्फाई हबो द नीड विल बी सैटिस्फाइड ही गॉट द गोल एंड नीड सैटिस्फाइड सेतिक बेले लर्निंग विल बी परमानेंट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू अदर सिचुएशन यही समय लर्निंग टा जेतेबेले अंडरस्टैंडिंग बा इंटेलिजेंट वे रे जेतेबेले सॉल्यूशन होउची से लर्निंग टा घोषेबाक दरकार होनी पिला निजे प्रिपेयर होउची निजे करूची सेतेबेले तार इनर इंटेलिजेंस टा यूज करूची तार निजर एटीट्यूड डेवलप करिवो टू लर्न तेणु हाउ इट इज अप्लाइड इन एजुकेशनल सिचुएशन दैट इज हियर द लर्निंग थ्योरी आम देखिले कौन ना हियर इज होल इज ग्रेटर देन पार्ट हियर होल सिचुएशन जोटा कि थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग रे पार्ट इज इम्पोर्टेंट दैट इज गोटे स्टिमुलस सहित आउटे रिएक्शन ताधरे बॉन्ड फॉर्मेशन करुच्ची पार्ट पढ़ी पढ़ी सी होल कथा जानूची घोषी घोषिकी गोटे जिनस से बुझुची बारंबार ड्रिल करके मन रखुची किंतु एठी ए सिचुएशन रे गोटे होल सिचुएशन गोटे होलटा को पिला दवा दरकार गोटे पोएम जड़े कविता पढ़ुची ताकू आग अधा जदि गोटे कविता पढ़े दवा धर वर्षा कविता पढ़ुची वर्षा कवितार आम गोटे स्टांजा पढ़ीदेले ताहले पिलार किसी हासबनी अंडरस्टैंडिंग जो होल कविताटा पढ़ी सारी गोटे पार्ट ताकू बुझेबा सेतेबेले सेटू होल रु पार्ट को गले दैट विल बी मोर एंजॉयबल एंड परमानेंट सेठी तेणु हियर होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट तेणु होल सिचुएशन पिलाटा को जबा दरकार जेकोसी जिनस आम जियोग्राफी पढ़ौचे हिस्ट्री पढ़ौचे तो गोटे होल आइडिया देकी ताधर आम पार्ट को जीवा then learner to see relevant parts and act intelligently without any wild guess तेणु एठी लर्नर कौन करिवो आगो देखिवो वाइल्ड गेस करिवोनी से खाली गेस करदबनी जे केमती सॉल्यूशन हबो ताको इंटेलिजेंट गेस करिवो जेमति कि एक्सपेरिमेंट रे देखैला से इंटेलिजेंट वे रे गोटे गोटे नै कि बॉक्स को थोइकी जाई कदली पाउची बा बाडी दिटा को जॉइन करिकि पाउची सेतेबेले तार रिलेवेंट पार्ट्स कौन एठी ना इट्स सब डिफरेंट बॉक्स सब जो रहिला सेमती लर्निंग सिचुएशन रे स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीचिंग लर्निंग एड्स एंड दे कैन यूज दिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और इन लर्निंग सिचुएशन डिफरेंट
लर्निंग इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड आम गोटे एक्सपेरिमेंट करुचे स्कूल रे ताकू एक्सपेरिमेंट देखईदबा खाली कहीदबा तीन प्रकार आम पिला खाली कहीदबा पढ़ीदबा आउ गोटे एक्सपेरिमेंट को देखईदबा आउ गोटे पिला निजे कर तेणु कौ वे आमको जो साधन गुड़ाक दिज्व से रिलेवेंट पार्ट को से जोड़िकी से कर गोटे गछ विषय पिला पढ़ुची ट्री रो डिफरेंट पार्ट्स आम ताकू मुहर कहीदबा ट्री रो यहाँ हूँ यहाँ पत्र ये फूल डाल बा ताकू नहीं चित्रटे कर देखे पार बा ताकू रियल लाइफ सिचुएशन रे गछर डिफरेंट पार्ट कौटा अच्छी निजे देख स्टडी कर तेणु हियर रिलेवेंट लर्नर्स हैव टू सी द रिलेवेंट पार्ट्स जो सिचुएशन पढ़ाऊ तार रिलेवेंट पार्ट्स आम जियोग्राफी पढ़ुचे आम खाली आम ओडिशार को जगह भी आम जापर जदि पिला पढ़ेला बेले टोटाल गोटे ग्लोब देखा ग्लोब रो डिफरेंट जगह देखा डिफरेंट महादेश अच्छी देखा ता भितर आम देश ता भितर आमर स्टेट रे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट तापर आम ये अच्छु यही प्रकार होल जो आम पार्ट को आसवा दैट लर्निंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल एंड परमानेंट एंड स्टूडेंट्स विल अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएसन जब तो पचारा से किसी कहीपर तेणु जियोग्राफी एमती पढ़े पार हिस्ट्री जो पढ़ेगा सेमती आम गोटे होल वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडिया हिस्ट्री एंड लोकल हिस्ट्री हियर फ्रॉम होल टू पार्ट आउ रिलेवेंट पार्ट गुड़ाक भितर कौन रिलेशन अच्छी देखा तापर ये हियर लर्नर्स मोटिव एंड पर्पस इज वेरी इंपोर्टेंट दैट इज सेंट्रल टू लर्निंग तेणु शिक्षण पाई मेन है मोटिव बा पर्पस मोटिव कौन जो शिखुची गोटे पिला तार लक्ष्य रहा दरकार मोर कौन आसब यहाँ तेणु से गोलटा कौन हम मु पाठ पढ़ी सारे कौन करी बा मोर निजर फैमिली भरण पोषण पढ़ी बा निजे सर्टिफिकेट पढ़ी बा निजे ज्ञान आहरण पढ़ी बा भविष्य में गोटे चाकरी करी यही सब जो मोटिव आउ पर्पस रहिले लर्निंगटा बेटर हम रोल ऑफ द टीचर कौन करेंगे क्लासरूम सिचुएशन रे मेन लर्निंग थ्योरी इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी हाउ इट विल बी अप्लाइड इन क्लासरूम सिचुएशन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर तेणु मेन है टीचर है मेन सेंट्रल पोजीशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड इज द सेंटर पोजीशन बिकॉज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नाउ आवर सिस्टम इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तेणु चाइल्ड इज इन द सेंट्रल पोजीशन बट रोल इज मेन रोल सेंट्रल रोल दैट वाज प्लेड बाय द टीचर कौन रोल रही तेणु जिते यही जो जिनस आम होलटा को परसेप्शन हियर इज इम्पोर्टाट ऑर्गेनाइज फील्ड होल इज इम्पोर्टाट पैटर्न कन्फिगरेशन इज इम्पोर्टाट तेणु ये कौन करवा ना टीचर सब्जेक्ट जो पढ़ेब से गोटे होल दबा आग होल सिचुएसन देकी होल रु धीरे धीरे पार्ट को जीव तेणु जहाँ जमी एग्जांपल देली पोएम पढ़ेला बेले हो हिस्ट्री पढ़ेला बेले हो बा मैथमेटिक्स पढ़ेला बेले हो जेकोसी सब्जेक्ट पढ़ेला बेले आग होल सिचुएसनटा को दिज्व सब्जेक्ट जो पढ़ाऊँ आग गोटे होल आइडिया देकी तापर पार्ट को जीवे तेणु डिस्कसन शुड बी डन फ्रॉम होल टू पार्ट देन ये जो गेस्टल्ट प्रिंसिपलटा केमिति होउची अप्लाई होउची केमिति ना दिस गेस्टल्ट प्रिंसिपल इज अप्लाइड to the while the syllabus were formulated or organization of the syllabus and planning of the curriculum planners they can use this curriculum planners syllabus जो माने प्रिपेयर करचंती सेतबेले टीचर मानकू नबा दरकार से माने देखिबा दरकार केमिति ऑर्गेनाइज्ड होउची जोठी कि एठी लर्निंग इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस नॉट ए पार्ट प्रोसेस बा एडिशन ऑफ द पार्ट टू होल नुहे धर आमर गोटे पार्ट को मिसई देकी होल करवा गोटे आम बॉडी जो फंक्शन कर टोटल हैंड लेग हेड टोटल इंटरनल ऑर्गन दिस इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस किंतु पार्ट कहले डिफरेंट हम तेणु ये लर्निंगटा केमती गोटे सिलेबसटा जो तैयारी होची दैट मस्ट बी ए ऑर्गेनाइज सिलेबस एवरी टॉपिक्स मस्ट बी रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड टॉपिक्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो दे हैव इंटीग्रेटेड with others they have components or these components must be interrelated with other subjects also tenu organized syllabus and curriculum when curriculum are developed they also use this principle Gestalt's principle kon na whole to part or perception of the whole situation then topics should be integrated into a whole this topic whatever topics
धर मैथमेटिक्स रे पढ़ुची जो टॉपिक गुड़ा पढ़ा हम से टॉपिक भितर गोटे टॉपिक रु आउ गोटे टॉपिक को थिबो रिलेशंस थिबो एगुड़ा वाटर टाइप कंपार्टमेंट नुहे सब टॉपिक सहित से इंटीग्रेटेड होते सेमती मैथमेटिक्स सहित इंटीग्रेशन हम साइंस सहित इंटीग्रेटेड हम इंग्लिश सहित अदर लैंग्वेजेस तेणु टॉपिक्स विल बी इंटीग्रेटेड into a whole subject matter. Then teacher should create interest and curiosity among students by motivating them. Motivation is a great factor. The motives ta natural motives अच्छी जो मानकर पिलांगर मोटिवेशन ताको इंटरनल मोटिवेशन से माने इंटरेस्टेड हेबे फास्ट स्टूडेंट्स को बाहर आमे मोटिवेट करिबा केमिति ना प्रोवाइडिंग रिवार्ड्स प्रेज and giving prizes. These are the outward motivation. Inward motivations they are provided with achievement motivation. पिला गोटे किसी करिवो ता सक्सेस मोटिवेशन रिजल्ट विषय ताकू जणैबा जानिले से माने मोटिवेटेड हबो तेणु तार क्यूरियोसिटी ता भितर इंटरेस्ट क्रिएट करिवा फास्ट थिंग तेणु टीचर फास्ट ही मस्ट provide previous knowledge to the student. They can relate with new knowledge. New knowledge must be, new instructions must be related to previous knowledge. Then teacher will create interest providing the students or showing them different teaching learning aids, and curiosity will be developed giving them the problem situation. Different problem situation देकी by activity or experienced central learning method of learning the teacher will create interest. That experience centered learning जदि टीचर व्यवहार करिवे बा एक्टिविटी मेथड जदि करेबे ताहले पिला डेवलप करिवे तांको प्रॉब्लम मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोजेक्ट मेथड यही मेथड जदि आमे ताको करेइबो पिलांकु ताहले तांकर इंटरेस्ट डेवलप करिवो पिला निजे इन्वॉल्व हबो खाली शुणिले जति से मन रखिबनी बा ताकू देखिले जति मन रखिबनी निजे कले बा कार्य एक्टिविटी रे सेति से ग्रहण करि परिबो. Then learners acquaintance with specific aims and purpose of learning. तेणु learners must be acquainted with the aims and purpose of learning. कोटा ये धर हिस्ट्री पढ़ुची से कहीं पढ़ुची तार लक्ष्य कौन पिला खाली पढ़ुची पढ़ी दूची एटा पढ़ा कथा परीक्षा रे मार्क रखी ये पढ़ी पास करी पढ़ी किंतु एक्चुअल कौन लक्ष्य कौन जो सब्जेक्ट जहाँ जहाँ लक्ष्य रही से विषय पिला जनइबा दरकार यही विषय पढ़ी सारा पर व्हाट आर दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स को नॉलेज ज्ञान कौन से पाइबो व्हाट आर द गोल्स ऑफ दी और एम्स एंड पर्पस ऑफ द लर्निंग मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट्स. Then making learning an intelligent task by using mental ability. इठी पिला को mental mathematics दिया जिवो mental creativity development पाई different activities दिया जिवो. आज for example जदि पिला को कहिबा गोटे ABLE लगे कि जमते टेबल सेमते ABLE लगे कि आउ केते गुडा वर्ड कुह बा ये धर एमती गोटे प्रकार समाधान हैला आउ को प्रकार रे तुमे करि परिबो बा गोटे पैराग्राफ देकी आ टाइटल अच्छी या तुम्हें आउ गोटे टाइटल तादरे दियो विभिन्न प्रकार आम वे पिला देकी विभिन्न प्रकार स्टेट देखी सेटा को स्टेट को डायरेक्शन अच्छी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज दि जापर जो थे कि मेंटल एक्टिविटी पिलार हम और इंटेलिजेंट वे रे से सॉल्यूशन करि परिबो. देन एनकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज थिंकिंग रीजनिंग एंड क्रिएटिव मेंटल पावर रादर देन मेकानिकल ड्रिल. खाली घोषैबानी पिला घोषी दियो वर्ड घोषी दियो आकु घोषी दियो वर्ड घोषिबा दरकार तार स्पेलिंग किंतु अर्थ जानिबा दरकार सेमती विदाउट मेकानिकल ड्रिल पिला को इंटेलिजेंट वे सॉल्यूशन पई दबा पिला निजे आइडिया करी निजे केमती से सॉल्यूशन बाहर करिवो इंटेलिजेंट गेस करके तार सॉल्यूशन करू. देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 theories of learning. One trial and error learning theory by E.L. Thorndike. The experiment was conducted by E.L. Thorndike on cat puzzle box experiment. Then another experiment
was conducted by Ivan P. Pavlov, a Russian physiologist, on dog upar experiment gote karthile, classical conditioning. Then this is the insightful learning theory. Here main propounder is Wolfgang Kohler. He had conducted experiment on chimpanzee named Sultan. Here we can compare this two learning, trial and error, insightful learning. Trial and error learning theory was developed by L. Thorndike. I have already discussed it. A theory re, trial and error learning theory re, this group is under the school of psychology known as behaviorism. Behaviorism re ethi trial and error learning re hochi kono na, that is connection between stimulus response type of learning. तो बॉन्ड फॉर्मेशन हम केमती स्टिमुलस रेस्पॉन्स मन पकाओ जमती बिराटा डिफरेंट एक्टिविटी कला करू करू तार पाद चापी हो गला, गेट खोलीगला, से माछटा खाई पाला. एटी स्टिमुलस होउची फिश, रेस्पॉन्स होउची राइट एक्शन, ओपनिंग प्रेसिंग द लिवर और पुलिंग द लूफ. तेणु से टाणीदबा बा गेटा खोलीदार ट्रिक शिखा हूँ रेस्पॉन्स, स्टिमुलस हूँ फिश. तेणु एठी लर्निंग कौन है ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन हूँ. किंतु इनसाइटफुल लर्निंग रे, इनसाइटफुल लर्निंग है अंतर्दृष्टि शिक्षण. एथरे कौन हूँ ना एसएस टाइप ऑफ लर्निंग. एठी हूँ टोटल स्टिमुलस सिचुएशन. therefore it is called SS type of learning. Total stimulus situation is given. It is सुल्तान देख ए एक्सपेरिमेंट रे टोटल गोटे केज भितर टोटल सिचुएशन को से देखिला परे तार लर्निंग डेभलप हैला केमिति ना थ्रू इनसाइट. एंड सेकेंड नेचर है कौन आर ना ग्राजुअल. दिस ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेस इज ग्राजुअल. धीरे धीरे होची गोटे स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड है आउ गोटे लर्निंग शिखिबो तो आउ थरे से शिखिबो सेमती बारंबार ग्राजुअल धीरे 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 गोटे रु सिंपल रु धीरे 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 ऊपर जाए कॉम्प्लेक्स जाए जीव. किंतु इनसाइटफुल लर्निंग रे दिस लर्निंग आइडियाज कम ऑल ऑन ए सडन. केमिति ना सडन इनसाइट आसीबो गोटे जिनस सी चिंता कर विभिन्न सिचुएसन देखी वाओ फिलिंग आसो हाउ आई कैन डू इट वाओ ये जो फिलिंग ता भितर आसला मेंटली से सॉल्व कला दैट इज सडन इनसाइट. देयरफॉर एटा सडन है किंतु ट्रायल एंड एरर रे एटा ग्रेजुअल प्रोसेस. धीरे धीरे जड़े बारंबार बारंबार हैबिट फॉर्मेशन हम घोषिकी जड़े शिखब ड्रिल कर ताकू प्रैक्टिस कर. एठी किंतु ड्रिल प्रैक्टिस नहीं गोटे तार आइडिया आसला से अप्लाई कला आइडिया तार समाधान से करिपाला. सेतेबेले कौन होची ना तार सडन इनसाइट गोटे आसला इंट्यूशन ता मुंड को आसला. तेणु हियर इंटेलिजेंट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. देयर इज नो गेस वाइल्ड गेस. Then here stimulus response learning responds to part of the situation, that is here the learner responds to the part of the situation. Learners respond करती केमती part of the situation माने ताको अधा दिहला से आज तू एतिकी पढ़ पणिकियाटा घोष से घोषला तापर 2 को कला 3 को कला 4 को कला घोषला. किंतु एठी हला होल सिचुएशन ताको दिहला अंडरस्टैंडिंग दिगला. इनसाइटफुल लर्निंग रे टोटल सिचुएशन विल बी गिवन टू दी लर्नर. हियर जितेबाला से कहली पोएम पढ़ाई कि टोटल पोएमटा दिज्व. मैथमेटिक्स पढ़ेला बेलू टोटल आग ताकू तार धारा सब बतई दिज्व केमिति तार सब यूज कर टोटल आइडियाज ताकू दिज्व अंडरस्टैंडिंगटा तार डेभलप कर तापर से ताकू पार्ट पार्ट दिज्व सॉल्यूशन करने बा समाधान पाई. In trial and error learning practice and repetition is important. जहाँ कहली आगुरी बारंबार जो गोटा जिनस प्रैक्टिस रिपिटेशन ता माने गोटे कथा बारंबार प्रैक्टिस करा. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तेणु दरकार यहाँ फॉर द प्राइमरी स्टेज रे एटा प्रैक्टिस बारंबार प्रैक्टिस कले लर्निंग विल बी परमानेंट. हियर द लेस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, मोर इज रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग and developing insight. Here intelligence, reasoning and survey, inspection, these ideas should be developed. Then kemiti how to survey, how to observe the whole situation, and here perception is important. Perceive the whole situation, survey the whole situation, inspection, evaluation of the problem, how to find out the solution, evaluate the results कौन है केमिति करा जिवो.
এইগুड़ाक एठरे रहुची एठी हला लेस प्रैक्टिस बट अंडरस्टैंडिंग केमिति हला केमिति सॉल्यूशन हला एगुड़ाकर बाहर करवा तापरे ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी हला वेरी सिंपल ऑर्डर दिस इज मेकानिकल कहीं ना मेकानिकली से माने शिखा जाउची तांकू किंतु मेकानिकली माने से जेमति करू करू बाय चांस दे लर्न बाय चांस मेकानिकली विदाउट यूज एनी cognition. Here cognition, insightful learning, cognition is important. Cognition means knowing the thing, understanding the thing by understanding and in the intelligent way of solving the problem. This is higher order, complex order theory, complex order by higher order learning. And in trial and error learning, passive and it is passive and mechanical. Here the active involvement student रो होबनी कारण बारंबार घोषले तार इंटरेस्ट होबनी से किसी तार एक्टिवली पिला अधरे इन्वॉल्व होबनी किंतु हियर इन इनसाइटफुल लर्निंग द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग कहीं ना जो एक्टिविटी बेस रे जो एक्सपेरिमेंट निजे करिवो थ्रू हिज एक्सपीरियंस ही लर्न्स एंड से ये जो एक्सपीरियंस रु कौन तार है भूल है से थरे करदेला ता ट्रिक शिखिगला से तार बुझिला हियर इन ट्रायल एंड एरर जे एप्लीकेबल टू लोअर ऑर्डर एनिमल्स एंड चिल्ड्रेन जमती कैट उपर एक्सपेरिमेंट है सेटा अन्य रैट कैट अदर सब लोअर एनिमल उपर होती पिजियन किंतु एठी लो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन एटा एप्लीकेबल किंतु this is insightful learning applicable to the higher human beings. It is learning in trial and error learning solution came by chance. Here learning is purposive and goal directed. I have discussed on insightful learning theory which was developed by Wolfgang Kohler. He has conducted his experiment on a chimpanzee known Sultan, and this theory is known as insightful learning theory because here learning takes place due to the insight, and here this learning is intelligent way of solving the problems, and it is very important and it can be applied to the classroom situations, and the students of higher class can be benefited by this learning theory. Thank you.